So you have Good morning, sir. so you have an interview for the GAIL, no? Gas Authority India Limited. Yes, sir. Yes. An interview. 12th of August, sir. 12th of August. Okay. Okay. So first of all, just introduce yourself. Thank you, sir, for giving me the opportunity to introduce myself. I am Akhilesh Chittipol. I am born and brought up in Bhiwandi in Thane district. My schooling is done from a government school. I have completed my BTech in Chemical Engineering from a DJ Sangvi College of Engineering, Vileparle, Mumbai. My BTech project is manufacturing of acetone from isopropanol, and I have secured All India rank 28 in Gate 25 and All India rank 98 in Gate 24. And currently, I am pursuing my MTech at IIT Bombay. My hobbies are teaching to students who are preparing for the JEE and NEET and playing cricket. That's all about me, sir. Thank you. Okay. Okay. So Shikha is going to be joined now here. Okay. She is going to take your HR. So I will start with the technical part, then the HR will be continue. Okay, now. Okay, okay. So first of all, just explain me the project. Sorry, sir. I'm not able Internship. to hear you First of all, properly. I'm saying just explain me your internship. What you have done during your internship here. Yes, sir. So my internship is at Prachi Services Limited, and duration is about 45 days. Basically, the company offering services in the environmental engineering and management, such as environmental auditing, wastewater treatment, and management. And my role in this company as an intern as first study of Green Core reference guide for the sustainable companies, and second one is that assistance in preparing PPTs for the components of greenhouse gas mitigation and waste management for the IOCL Jammu bottling plant. For IOCL Jammu plant. IOCL Jammu bottling plant. Okay, ठीक है. And what was your BTech project? So my BTech project is manufacturing of acetone from isopropanol, sir, basically. Okay, so you have done the project internship on this waste management here. Can you tell me the difference between the municipal solid waste, industrial waste, as well as the hazardous waste here? So difference between municipal solid waste and others. Generally, general difference between the municipal solid waste, industrial waste, and the hazardous waste. Sir, in hazardous waste, mainly the toxic chemicals were involved. Basically, paint. So basically, I have done the internship in IOCL Jammu bottling plant, where the paint is used to paint the LPG cylinders. So the paint waste, empty paint containers are coming in the hazardous waste. And sir, in solid waste, in non-hazardous waste, the cylinder scrap, cylinder scrap is coming, and such as anything solid which are not hazardous, which are not non-toxic, that all are coming from in non-hazardous waste, sir. And also, sir, the sewage waste generation from the plant, that is coming liquid waste, liquid waste, sir. Okay. Okay, that is okay. Okay, and how do we handle this this hazardous waste here? What is the procedure? So basically, in the internship, that is not discussed actually. The how manage the waste. So simply they said they calculated the waste emitted by the plant, and they tell that how the waste reduction techniques are implemented, such as of reuse of barrels as dustbins, and installation of effluent treatment plant for the sewage waste generation. And for gaseous waste, we should spread awareness stations so that the minimum gaseous waste is done. Okay. And what are your favorite subjects? So my favorite subjects are fluid mechanics, heat transfer, thermodynamics, mass transfer. Okay. Okay. What is the reason of the formation of boundary layer? Reason of the formation of boundary layer. Sir, is it for velocity boundary layer? Yeah. For the hydrodynamic boundary layer. Yes, sir. The reason for the formation of boundary layer is due to, sir, momentum disturbance, sir, basically. Momentum disturbance. Okay. This dimensionless number there is involved to, I can say, to measure the hydrodynamic boundary layer as well as the thermal boundary layers. Prandtl number, sir. Delta upon delta Th is equals to Prandtl number is to 1/3, sir. And its significance is mu by alpha, momentum diffusivity to the thermal diffusivity. Okay. And what is the meaning of Nusselt number? So Nusselt number is a ratio of the convectivity transfer in fluid to the conductivity transfer in fluid, and its formula is HLC upon K. Basically, LC is the characteristic length. And what is the minimum value of the Nusselt number? Minimum value of the Nusselt number is, sir,
0. Is it? Sir, Just think wait. can be the minimum value. Hmm. So it should be 1, sir, minimum. It should be 1. Under what scenario? Can you tell me any practical example here where the Nusselt number can be equal to 1? Any practical example? Practical example, sir. Sorry, any body in which only conductive heat transfer is happening. So, like as we say, the convective heat transfer to the conductive heat transfer. So, convective heat transfer is nothing but the conduction plus advection. If in a body the advection is 0, the heat transfer due to bulk motion is 0, then convective heat transfer is equal to conductive. The ratio should be 1, sir. Okay. Okay. Let us suppose if there is a pipe here. Okay, a simple pipe is there, and the fluid is flowing through it. Now I can say the force convection is taking place here due to the velocity of the flow. Okay. In that case, how does the heat transfer coefficient is going to vary? Heat transfer coefficient is that. Sir, do you ask about the profile of heat transfer? Now I'm just asking for how the heat transfer coefficient is going to be vary. Okay, whenever the fluid is flowing through the pipe here. You can assume anything. Either heating of the fluid is taking place or the cooling of the fluid is taking place. Heating or cooling. Sir, it is decreases. It decreases. Why? Just a second, sir. Just take your time. So basically, the profile across the length of the pipe, it should be decreases, sir. And its slope is also decreases, I guess. If it is a fully developed is there. Fully developed flow is assuming Okay, the slope. Yeah. slopes are H versus X. H versus X, if we plot, it is rectangular hyperbola, sir, I guess. ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ पे आपने भी मेंशन करा fully developed flow and the developing flow. What is the difference between these two? So basically, in fully developed flow, yes, sir. In comparison with the velocity, in fully developed flow, velocity is only a function of radius. In radial direction, the profile would be there. But in developing flow, it should be velocity is a function of length as well as the radius. Here is a function of r and s. Okay. Sir? And in terms of नो इशू. ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ पे जैसे नस्ल नंबर की वैल्यू आपने मुझे बताया, नस्ल नंबर फ्लो थ्रो पाइप के लिए कैसे क्या आपके पास वैल्यू होगी उसकी? फ्लो थ्रू पाइप के लिए सर बेसिकली अगर फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो देन वी यूज सिलेटेड इक्वेशन. सिलेटेड इक्वेशन यूज कर सकते हैं एंड हाँ सर सिलेटेड इक्वेशन. फॉर द लैमिनार फ्लो भी सिलेटेड इक्वेशन यूज कर सकते हैं सर. दैट इज दोनों के लिए वैलिड है बट द फॉर्मूला वुड बी डिफरेंट. फॉर टर्बुलेंट फ्लो मोस्टली यूज दैट इज 0.023 Reynolds raised to 0.8 Prandtl raised to 1/3. That is for turbulent flow. For laminar 1.86 Reynolds Prandtl upon L by D the whole raised to 1/3. ठीक है. अच्छा, हीट एक्सचेंजर्स के बारे में आपको कुछ आइडिया है? Yes sir. ओके. अब आपके पास यहाँ पे तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बेफल्स का यूज क्यों करते हैं? So baffles are used. Yes sir. Baffles are used to direct the shell side flow. It increases the turbulence of shell side flow so that the maximum heat transfer is happening between the shell side flow and tip side flow. Okay, and how do we design the shell and tube heat exchanger? What is the method? So Kunz method sir. Based on that we can design. Okay, ठीक है, no issue. What is the difference between the recuperative and the regenerative type of heat exchanger? Sorry sir. And the regenerative type of heat exchanger. The difference between these two. Sorry sir, I'm not aware about that. Okay, actually आपका जो shell and tube heat exchanger है, that is the recuperative type का. Okay, थोड़ा सा देखना आपके पास यहाँ पे. Heat exchanger में कैसे आप decide करते हो in practical scenario that we either we have to use the AMTD or the LMTD here? Yes. LMTD if so see if two fluids are there, then delta T1 and delta T2 we calculated, taking the ratio of delta T1 and delta T2. If that ratio would be less than 1.5, then we use AMTD, arithmetic mean temperature difference. If that ratio is greater than equals to 1.5, then we use LMTD, that is log mean temperature difference. Okay, let us suppose if we have to compare the counter flow heat exchanger with the parallel flow heat exchanger. Okay, in which heat exchanger the irreversibilities are going to be more? Irreversibilities. In concurrent flow, sir. In parallel flow, sir. Parallel So flow. because
sir, because in counter flow, the driving force is almost same, is almost constant throughout the heat exchanger. But in parallel flow, the driving force is initially is more and it is going to be decreased. Due to this variation, the irreversibility is more in parallel flow than in counter current. ठीक है. Okay, Akhilesh, let me provide my feedback here. After that, Shikha ma'am will agree with the HR part. Okay ना? Thank अब you, देखो sir. तो आपके पास यहाँ पे टेक्निकल में सबसे पहले आपने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर तो काम कर आपने इंटर्नशिप कर रखी है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए था. जैसे मैंने आपको बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि म्युनिसिपल सॉलिड और आपके पास यहाँ पे जो हजार्डस वेस्ट है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि जनरल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं. ठीक है ना? ये आपके पास एक सिंपल HR में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था ये वाला. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. Yes, sir. अब आपके पास इन तीनों ही वेस्ट की मैनेजमेंट कैसे की जाती है आपके पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये भी जनरल अप्रोच है Yes. बेसिकली, क्योंकि एज अ इंजीनियर यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. सेकंड, आपके पास यहाँ पर आपसे जो मैं पूछ रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका जो बाउंड्री लेयर का आप जो मुझे आंसर प्रोवाइड कर रहे हो ना, मुझे थोड़ा सा वीक लगे आपके कंसेप्ट वहाँ पे. जैसे आपने मुझे उसका सबसे पहले तो प्रेंटल नंबर के बारे में आपने सही इन्फॉर्मेशन दी, दैट इज ओके. नसल नंबर Sir, से sir. रिलेटेड आप जो Sir, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. can you please repeat after how the waste management is done? क्योंकि सर मेरा कॉल आ गया था कट हो गया. मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आपके पास बनता है यहाँ पर. इन वेस्ट की मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, चाहे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे आपके पास यहाँ पे हजार्डस वेस्ट क्यों ना हो. ठीक है, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट कैसे करते हैं. सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स में बाउंड्री लेयर का जो कंसेप्ट था वो मुझे थोड़े से वीक लगे. ठीक है, उसका आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप मिक्सअप हो चुके हो वहाँ पे फ्लो थ्रो पाइप और आपके पास यहाँ पे फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट के बीच में. अब आपके जो आंसर्स आते हैं, जैसे मैं आपसे पूछा था कि अब आपके पास यहाँ पे नसल नंबर कैसे वेरी करेगा या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे वेरी करेगा इन द केस ऑफ फ्लो थ्रो पाइप. So you should be aware of that whether we are talking about the laminar flow or turbulent flow. Okay, in that case also you have to specify that how the Nusselt number is varying. So actually the laminar flow के लिए अगर आप देखोगे तो heat transfer coefficient हमेशा constant रहता है, because the Nusselt number is having a constant value that is 4.36 and 3.666. ठीक है ना? Yes, yes. लेकिन आपने जो मुझे आंसर प्रोवाइड करा दैट इज फॉर टर्बुलेंट फ्लो है. ठीक है, और वो भी आपके पास फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट में एंटर कर गए थे वहाँ पे. तो थोड़ा सा इसको क्लियरली इसकी इमेज बना के रखना. नेक्स्ट आपके पास हीट एक्सचेंजर आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एज फॉर केमिकल बैकग्राउंड. तो उसकी क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपको पूरी पूरी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, एक आपने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे पंप्स वगैरह की स्टडी करी थी या पंप्स को देखा हो? नहीं 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 सर. आपके सर पास एक्चुअली ना बेसिकली सर इंटर्नशिप में ना कुछ नहीं किया हम लोगों ने. बेसिकली वो कंपनी दूसरे कंपनी का टेंडर लेती है. और जैसे IOCL जम्मू बॉटलिंग प्लांट का टेंडर है वो हमारे कंपनी के पास. तो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स है. एक्चुअली ग्रीन को ना एक रेटिंग सिस्टम है सस्टेनेबल कंपनीज का. मतलब वो ग्रीन को यूज करके हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे कंपनी का. और फिर बेस्ड ऑन पॉइंट्स हम रेट करेंगे कंपनी को कितना सस्टेनेबल है. लेट्स से 500 पॉइंट्स है तो प्लैटिनम ग्रेड, 300 है तो गोल्ड ग्रेड, ऐसा. तो बेसिकली उसमें PPT बनाया हमने. तो सर ये ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट ये सब ठीक है, तो इसीलिए वेस्ट एक ना जनरल इंजीनियरिंग कोई भी स्लाइड या डाउनलोड आपको मिल जाएगी नेट पे, उसको गो थ्रू करके उसको पढ़ लेना एक बार, तो आपको एक जनरल ओवरव्यू पता लगे. सेकंड, आपके पास यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा. सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जैसे है, ये एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है. ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है, हर इंडस्ट्री में मिलता भी है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. तो उसके बारे में थोड़ा Yes, sir. डिटेल स्टडी कर लेना कि कैसे कैसे क्लासीफाई करते हो, कैसा वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे कैविटेशन को अवॉइड करते हैं, NPSH प्राइमिंग क्या होती है. अब एंड टाइम इसको एक बार गो थ्रू कर लेना. ठीक है ना? बाकी बाकी ठीक था, बाकी ओवरऑल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और कुछ सर डाउट? ओवरऑल फीडबैक कैसा था? अभी ठीक है, आपका टेक्निकल एस्पेक्ट से सही है. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे HR स्टार्ट होगा तो HR सब ओके ना? ओके सर, ओके सर, थैंक यू. Yeah. All right, Akhilesh. Could you please introduce yourself again? Good morning, ma'am. First of all, thank you, ma'am, for giving me the opportunity to introduce myself. I am Akhilesh Chittipol. I am born and brought up in Bhiwandi in Thane district, Maharashtra. My schooling is done from a government school. I have completed my BTech in chemical engineering from a DJ Sangvi College of Engineering, Vile Parle, Mumbai. My BTech project is manufacturing of acetone from isopropanol, and I secured AIR 28 in Gate 25 and AIR 98 in Gate 24. And currently, I am pursuing my MTech at IIT Bombay. My hobbies are teaching to students who are preparing for the JEE and NEET and playing cricket. That's all about me. Thank you. All right. Okay, why do you want to join GAIL as an executive trainee or engineer trainee? Ma'am, as an executive trainee, ma'am.
Why do you want to join GAIL? Ma'am, I want to join GAIL because it operates in the key areas of the chemical engineering like natural gas processing, petrochemicals, and pipeline operations, which give me an Hmm. exposure to the large-scale industrial operations and enhance my technical skills. And also, ma'am, GAIL focuses on safety, efficiency, and sustainability, which are the important aspects of the modern engineering. And it provides a stable and secure work environment, which is highly appealing in the today's job market. And also, ma'am, at last, as I'm the single earning in my family, the moment I join GAIL, that I will be very sure that I will be in position to reduce the financial burden on my family. Okay. All right. Okay, tell me which is your biggest achievement so far? Ma'am, my biggest achievement is so far is getting All India rank 28 in GATE 25. Okay. All right. How do you handle failures if you will face any kind of failure? So how do you handle that? Mm, Ma'am, I can explain like this throughout the journey of my year. Like Hmm. I graduated in 2024. Based on that rank, I got selected IOCL. Hmm. But based on through that interview process, during this uh, during my medical examination, I was declared unfit due to my chest size. It was 79 centimeter, but mine Hmm. was 77.5 centimeter. And Hmm. after that, I started working on my physical fitness to gym and proper diet, and simultaneously prepared for the GATE 25 and secured All India rank 28. In that way, my biggest failure is I got rejected in IOCL. In that situation, I can handle myself. I can overcome my failure. I can work upon myself and prepared well for the GATE 25 to get the opportunity for the upcoming PSUs. In that way, I can handle my failures. Okay. All right. All right, Akhilesh. Apart from this, please tell me that what are the major products and services of GAIL? First of all, GAIL is a leading natural gas company. It has a diverse aspects across of the natural gas value chain, like in natural gas transmission, production, LPG production, transmission, LNG Hmm. regasification, uh, Hmm. petrochemicals production, liquid hydrocarbon production, exploitation and production. In the, now it is in renewable energy also, and Hmm. city gas distribution. There are many products and services of the GAIL in which. Apart Okay. from Is there any specifically competition? Mm-hmm. Uh, if you ask products of GAIL, like it produces mainly LPG. GAIL is the first Indian company that owns and operates LPG pipelines. LPG products, CNG, PNG, and petrochemicals in polyethylene derivatives, everything. HDP, LLDP, LDP. Hmm. Okay, tell me, Akhilesh, like I can say that is there any competitor of GAIL also? Yes, ma'am. In India, mainly there are competitors of GAIL are Adani Total Gas, Gujarat Petronet, Hmm. and some of them are it's joint ventures also, like Mahanagar Gas Limited also competitor. Hmm. Hmm, ah, I think this three Okay. are. All right. And what could be your roles and responsibility as an executive trainee in GAIL? After joining as an ET, I will Hmm. undergo structured training in various operations like natural in gas processing, petrochemicals, and pipeline operations. Uh, Hmm. uh, and where I will be know each and every aspects across these three mainly. And after this training, uh, I may be posted as a process engineer or operation engineer based on the company's Hmm. requirement. And and responsibility is to operate a plant in a efficient and effective manner in a day to life in a every day to day life. Hmm. Okay. All right. Okay, apart from this, please tell me what are the important personality traits you have acquired in yourself basically in last some years when you are studying and now you're doing a MTech and even you got selected in IOCL. So what you have been learned and how you have inculcated in your personality as well, which is very helpful for
for your further future as well, like if you're coming in the GAIL. So what are the personality traits you have? First of all, personality traits. I will. First one is that hardworking. Although it is very Hmm. simple and it is very common, Hmm. but I believe hardworking and consistent. In Hmm. any throughout this years, I failed many times, and Hmm. in that situations I can handle myself. I can consistent throughout my preparation so that I can secure better rank this year compared with the last year. So consistent and hard work is first one. And also, ma'am, one more thing I would like to add in this is I will do teaching in my free time. So due to teaching, I can develop teamwork and leadership qualities, and it enhance my communication skills as well. While teaching, I can explain the complex concept clearly to the students, and also, ma'am, it fosters patience and problem-solving abilities. These are many Hmm. qualities I can gain my experience of teaching, ma'am. Since I teach about last 4 to 5 years, these are the qualities that this will. I believe that these qualities would help me in future aspects also. In future also. Hmm. All right, all right. Okay, what are your expectations from GAIL? What are expectations from GAIL? Ma'am, in what Hmm. sense, ma'am? I'm not able to understand. In what sense? Like expectations means you are joining, you want to join GAIL, so you have been expect something. Ki that's why I want to join GAIL. So why so? That's what I'm asking. Basically, why do you want to join GAIL, and what are expectations from GAIL? What are you expecting from this organization? Ma'am, my expectations from the GAIL is basically to learn the hmm, as I already explained that GAIL is operating in the key areas of the chemical engineering, like in natural gas processing, petrochemicals, and pipeline operations. And during this journey, I can gain the knowledge from my core sector field. Like all these are linked with my core sector field. First of all is the gaining knowledge from the core sector and this organization. The second one is ma'am. Hmm. Second one is ma'am. I'm adding to this. At GAIL's Usar plant is commissioned in 2025 in Maharashtra. Basically, if I get an opportunity Hmm. to work in Maharashtra, then definitely I will go for that. That is one of my expectations from the GAIL. And at last, ma'am, financial stability from the GAIL. As I am the single earning in my family, to reduce the financial Hmm. burden on my family. That's it, ma'am. These are the expectations from the GAIL. Okay, how you are the most suitable candidate for GAIL for this post? Yes, ma'am. I have the solid academic background in chemical engineering, and Hmm. I'm genuinely interested in applying in the energy and petrochemical sector. Hmm. After having a technical knowledge, I'm disciplined and eager to learn and ready to work in a real plant conditions, ma'am. And ma'am, ready to mm, and I'm being a fresher. I have the ability to adapt and work in any environment that provided to me, so that this and contribute to the organization goals, whatever the expected from my side. Hmm. Okay. All right, let me give you the feedback, Akhilesh. I've taken so many Thank you, sir. HR of yours and even mock also, and this is your mock. So basically, it is improving, of course. Improvement तो है ही है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और रेज करो, मतलब बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप ऑनेस्ट Yes, आंसर sir. देना शुरू करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब आपको लगता है कि यार बिल्कुल सच बोलना पड़ेगा, तो कैसे वर्ड्स यूज करूं, कैसे बोलूं। वो सच ही बोलना है पूरे इंटरव्यू में, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाओ और आप बोल भी रहे हो, बट उसके टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना। जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक्सप्रेसिव जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किस तरीके से बैठे हो, उठ रहे हो, क्या आप रिएक्शन दे रहे हो। वो आपके रिएक्शन से ही थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इसका क्या इमेजिनेशन है, क्या ये आंसर करने वाला। दैट इज यू नीड टू बी वर्क ऑन। अब जो एक्सपेक्टेशंस क्या है गेल से, कि मुझे चैलेंजिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां पर मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट करूं, और सबसे अच्छी बात मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज मिले जो मेरा कोर डोमेन है, और ताकि मैं उसमें बहुत अच्छे से अपनी टेक्निकल स्किल्स को अप्लाई कर सकूं।
राइट? दैट इज समथिंग जहां पर मैं अपनी वैल्यूज का लाइक यूज कर सकूं. दैट इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गेल. एंड ग्रोथ करियर, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. दैट इज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट, राइट? बाकी सब ठीक है, ये सारी चीजें करनी जो आपने बोला वो भी ठीक है, लेकिन वो एक ले मैन में आ जाता है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या ऐसा कुछ है. वो एक अलग चीज आती है. पहले आप ये बोलो, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, फिर आपको अगर थोड़ा बहुत ऐड करना हो तो. और इसके अलावा बहुत लंबे आंसर्स नहीं देने हैं, ऑल्दो लेंथ ठीक है, आंसर भी बाकी ऑलमोस्ट सारे ठीक है. हाँ, ओवरऑल ओके है, बट एक बार गेल का डॉक्यूमेंट रिवाइज कर लेना. और जो ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके अंदर क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आपने एक्वायर्ड किए हैं इतने सालों में, इतने टाइम में, लीडरशिप क्वालिटी, कमिटमेंट टू वैल्यूज या फ्लेक्सिबिलिटी या समथिंग लाइक दैट. वो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए खुद के बारे में, कि आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक वर्ड बताना है तो आप क्या बताओगे. दैट इज समथिंग यू नीड टू बी अवेयर. रेस्ट इज ओके. ठीक है, अब इतने सारे एचआर दिए हैं, मॉक दिए हैं, इंप्रूवमेंट हुई है, बट फिर भी अपना जेस्चर, पॉस्चर और आपके जो आंसर्स है वो ज्यादा मतलब और ज्यादा क्वालिटेटिव हो सकते हैं. दैट व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है, बाकी ओके ठीक है. ओके और इंट्रोडक्शन में कोशिश करो कि सारी चीजें मत बताना. हॉबीज वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत कंटेंट है. आप अपना ग्रीटिंग्स, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बीटेक एमटेक आप अभी कर रहे हो आईआईटी दिल्ली से, बॉम्बे से, जहां से भी आप कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट्स रहे होंगे या आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रही होगी, वो आप बता सकते हो. अगर आप हॉबीज, इंटरेस्ट या सारी चीजें वही बता दोगे तो फिर बाद में क्या बताओगे. वो लंबा भी हो रहा है, और मतलब वो एक फॉर्मेलिटी वाली चीज होती है कि हम सारी चीज आप अभी बता रहे हो तो बाद में व्हाट विल यू स्पीक, काइंड ऑफ. ठीक है, दैट इज समथिंग यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ. रेस्ट इज ओके. यस मैम एक पूछना था जैसे इंट्रोडक्शन में अपन स्टार्टिंग में ऐसा बोलते हैं ना थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ये इतना लंबा लाइन बोलना है कि नहीं ये बोल सकते हो, इतना लंबा कुछ नहीं है इसमें. मतलब इट्स गुड टू से आप बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. मतलब बोल सकते हैं और मैम हम्म. और मेरे को ना ये एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना जैसे हाउ डू यू डिफाइन योर पर्सनैलिटी इन वन वर्ड हम्म. अभी ये क्वेश्चन तो आया हाउ डू यू तो डिफाइन मतलब वन वर्ड. आपको एक ही वर्ड में बोलना है और क्विक आंसर देना है. दैट आई कैन से, लेट्स सपोज इफ यू विल आस्क मी लीडरशिप, और यू कैन से कैपेबल, कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, या फिर एम्बिशियस, या फिर आप और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो आप बोल सकते हो जो आपको लगता है जो आप हो. अगर वो ये बोलते हैं कि एक वर्ड में बताओ और एक्सप्लेन करो तो आप एक्सप्लेन करो. अगर वो बोलते हैं सिर्फ एक वर्ड में बताओ या सिर्फ दो वर्ड में बताओ तो सिर्फ में ही बताना है. दिस उतना बता के छोड़ना है ओके मैम एंड मैम ये पर्सनैलिटीज वाला बोला था आपने क्या क्या गेन किया थ्रू आउट द इयर्स वो मतलब मेरा कैसा हाँ, था आंसर आप मतलब वो ठीक था, बट आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो कि मैम आई हैव गेन लीडरशिप क्वालिटी, आई हैव रेज्ड माय कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन माय कम्युनिकेशन टू. मैंने अपने कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस पे काम किया है, लीडरशिप क्वालिटी को इनहेरिट किया है अपने अंदर, एंड ऑफ कोर्स मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है. आई स्ट्रेंथन दैट, ताकि मैं जल्दी से डिसीजन ले सकूं, हाँ या ना, या मुझे क्या अपने करियर चॉइसेस करने हैं. दैट इज समथिंग. ठीक है. ओके मैम ओके मैम ओके थैंक ऑल यू द सो बेस्ट. मच मैम थैंक यू मैम थैंक यू